हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक. स्वागत आप सभी का एक बार फिर से. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू. So please quickly join in and do mention into the comment section so we can start our today's discussion, right? So actually, in the evening I have some other sessions, so that's why I scheduled this session for 5:30 itself, right? Tomorrow we'll have session around 9 o'clock. ठीक है, कल का सेशन आपका 9 बजे ही रहेगा. That will be a final marathon from our side, and we will practice 100 exact 100 questions for 2 marker, 1 marker and half marker. ठीक है, जैसे हमने AFM में किया था वैसे ही आपका वहां पे भी करेंगे. ठीक है, तो एक बार जल्दी से आपका बता दीजिए. ऑडियो एंड वीडियो इज फाइन फ्रॉम माय साइड, सो वी कैन स्टार्ट द सेशन. अर्चना मैम, वेरी गुड इवनिंग. हाउ यू? I hope now you guys are prepared for RBWM examination. So very few days are remaining, like only one day is remaining for this particular examination. So try your best, do revise with the help of notes, so that previous 4 module wise sessions are a very important one. Like we have 100% coverage of the entire course curriculum and syllabi, so that will that is definitely going to help you in your upcoming examination. ठीक है, तो आज yes, हाँ, रामकृष्णा, वेरी गुड इवनिंग. ओके, चलो, तो shall we start then? Shall we start today's discussion? So again, we will start with the questions. Today we have a module wise revision. ठीक है, so we will revise all the 4 and 5 modules till E, that additional study material wala thing also. Okay, so see guys, like today's session is kind of module wise revision, whatever we have done in the past. Then tomorrow's session will be based on 100 questions, then 2 marker, 1 marker and half marker question. ठीक है, चलो, तो we'll start this session. A very good evening to all of you guys. Pulaki, very good evening. Yes, a very good evening to all of you guys. I hope you guys reached home. ठीक है, आप बहुत सारे लोग अभी ब्रांच में होंगे और बहुत सारे लोग आपका जो ब्रांच से लाइक ऑन द वे होंगे मे बी. ठीक है, तो जो लोग आपका नहीं भी देख पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड में देख लें इवनिंग के अंदर आपका. ठीक है, एंड कल वाला सेशन प्लीज डू नॉट मिस टुमारो सेशन. वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट उससे पहले भी जो हमने पास्ट में सेशन किए हैं, स्पेशली मॉड्यूल ए बी का आपका 2-3 पार्ट है, एंड डी, सी एंड डी. सी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो डू नॉट स्किप दैट पर्टिकुलर वन. चलो, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which of the following are advantages of retail banking? So it is all about retail banking and wealth management. So question is, a large client base to a spread of risk across many customers. So we, with the help of retail banking, we generally deal with masses. Okay, higher income due to wider customer base also. So we have so many options through which bank they can generally generate income from different sources, and credit risk may not be well diversified as loan amounts tend to be relatively high. So this is loan amount is basically low in this particular case. So I'll also go with option A. Whoever mentioned this particular one, right? So option A will be correct answer. In case of corporate banking or wholesale banking, loan amounts are higher side. So यहाँ पे आपका, like when we deal with the individuals or when we cater services to these masses, so the loan value is a bit lower, okay, if you compare with the wholesale banking and all, right? So option A will be right answer for this one. Next one, which of the following factor does contribute to growth of retail banking? So if you talk about the overall growth of retail banking, so whenever we talk about retail banking, keep things in mind, like we are going to deal with masses. So accordingly think about that particular thing, right? So the rise of young Indian professionals, increasing purchasing power of middle class, financial services, financial market reforms, easy and affordable access to banking services. So what you will suggest? Yes, I'll go with all of the above. Okay. So these all are the reason for the overall growth of the overall growth of the
retail banking segment, right? So everyone is well about this. Okay. So we have these particular factors: rise of young Indian professionals, growth. India is a young country. Basically, it is known as maximum population belongs to this, and they have small earnings and all. So that's why they'll be requiring retail banking. Okay. Growth of economic superpowers, increasing purchasing power of middle class, financial reforms, engine of economic growth, mass market, volume driven business. Then we have volume driven business, means we are dealing with masses, and with these small deposits in combination they become a bigger value, right? Easy and affordable access and financial liquidity. Next one: which of the following is characteristics of retail banking? So targeted an individual customer and the mass market segment, offer a range of liability, asset and service product to individual. The delivery models include both physical and remote channels. ठीक है? So delivery models भी हम लोगों ने आपका डिस्कस किए थे. ठीक है? So we have one is physical, branch layout and all. Another one is remote or electronic. ठीक है? So again, what will be our correct answer for this one? Option D will be right answer for this one. ठीक है? D will be right answer. Ramakrishna. Option D will be right answer for this particular one also, right? So banking facilitate are targeted at individual customers, focused toward the mass market, offer different liability asset and product, CASA and RAFA. Delivery models are physical as well as your remote or online, extended to small and medium sized businesses also, right? Next one: which of the following is not considered as an advantages of retail banking? What will be your correct answer for this one, guys? एक बार जल्दी से बताइए. So what will be your correct answer for this one? So D, हाँ बिल्कुल, high default rate. This is not an advantages of this particular one. So option D, this is basically a disadvantage that is generally categorized as and disadvantages, right? Next one: which of the following is not part of retail banking? So internet banking, providing term loan for project or credit to corporates, mobile banking, credit card facility. So what will be our correct answer for this one? Yes, very good. Option B will be right answer for this particular one. So this is generally part of our wholesale banking or corporate banking. Next one: after the outbreak of COVID-19, the future of retail banking will mainly depend on. So after this COVID-19, there are some areas which generally get leveraged through that particular pandemic situation, and they generally become the normal habit of the customers, and that is your online banking, retail bank, mobile banking, and all. Okay? So what will be your correct answer? Digital banking will be right answer for this one. Brick and mortar banking means physical banking. Okay? So branch banking and brick and mortar banking is same, right? So डिजिटल बैंकिंग जैसे लाइक वी हैव नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इन ऑल, सो जो आपका यहाँ से काफी ज्यादा ग्रो किए हैं पास्ट में. ठीक है? सो दैट इज द वन. सो डिजिटल बैंकिंग, दैट this area got immense boost, we can say, in past few years. Which type of payment infrastructure has the widest presence? So out of the given payment infrastructures, so which one has the maximum reach? ठीक है? सबसे ज्यादा जो रीच है आपका या जो पेमेंट्स होते हैं वो कौन से सेगमेंट्स में आपका होती है? So what will be your correct answer for this one? Answer will be UPI QR codes. ठीक है? So सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन्स आज भी होते हैं आपका वो UPI के थ्रू आपका. ठीक है? So UPI का जो मार्केट है दैट इज लाइक सबसे ज्यादा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या मंथ ऑन बेसिस पे अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट्स को भी जाते हैं, सो इसका जो ग्रोथ है दैट इज मैक्सिमम. ठीक है? Which of the following payment system handle the highest transaction value? ठीक है? Highest transaction value is get handled through which type of payment solution? तो क्या होगा correct answer? So what will be your correct answer? Yes, हाँ बताओ बताओ क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का. वेरी इजी वन. ठीक है? So what will be our correct answer for this one? RTGS, right? Real time gross settlement. So RTGS will be right answer for this one. ठीक है?
So in case of RTGS, we have minimum is 2 lakh rupees and maximum is as such there is no limit. ठीक है, तो अपर साइड के कितने भी बड़े जो ट्रांजेक्शन है दैट कैन बी हैंडल थ्रू. ठीक है, जैसे अगर आप अपने बुक को भी देखेंगे, सो RTGS ऑन टॉप, देन NEFT, देन ECS, DRCR, then IMPS and others, they are the one. ठीक है, next one. The evolution of retail banking in India can be traced back to the entry of foreign banks. Which of the following statements is correct about the entry of foreign banks as well as the retail banking aspects? Okay, so foreign banks operating in India set the trend in the late 1970s and early 1980s by introducing consumer banking model with hybrid liability and asset product. Standard Chartered and Grindlay's bank were pioneering in the introducing these type of products. Standard Chartered Bank created wave in early 1980s with their credit cards product, thereby spurring a growth in the retail banking. Bank of Baroda and Andhra Bank were two of the early players in the credit card business in public sector banks. Okay? So these all statements are correct about this particular one. Okay? So this is kind of some static in nature. So these kind of data I'll personally recommend to all of you guys, just entering to your examination hall. तो थोड़ा सा like मतलब एटलीस्ट 9 तारीख को अपने जो आपका जो शिफ्ट है ना वहां तक इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको लाइफ टाइम इनको ध्यान रखना है अदर्स. ठीक है, सो जस्ट आपका डू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर स्टेटस जो स्टैटिक्स हैं आपके हैं. ठीक है, टिल योर एग्जामिनेशन. ठीक है, वहां पे वॉमिट करके फिर निकल जाना है. ठीक है, दैट्स इट. सो उतने तक ही हमें इनका जरूरत है. Even in CIB also they are not required, right? So which of the following are prerequisite for the success of retail banking? So prerequisite means the basic requirement for the success of retail banking, or for retail banking success, the preparation, the background things and others. So that is the one. So presence of efficient delivery mechanism, it will be part of this. Both physical and remote. Direct banking, the fastest growing and dominant channel of the future. Product appropriateness, so that is also required. Pricing and scoring model for assessing credit worthiness. So this should be part of this one. So again, what will be our correct answer for this one? All will be right answer. So these are the prerequisite for the success of the our retail banking segment. So these are the one, the same things. Next one, guys. Based on the research and findings, the following pandemic-driven retail banking trends are expected to shape the future. Which one are correct? ठीक है, so इनमें से आपका correct statements कौन से हैं? So that is the one. ठीक है, blooming of digital banking after COVID-19, rapid adoption of blockchain by retail bankers. ठीक है, so blockchain is a technology which is generally used to manage or to secure our products and all. ठीक है, so blockchain technology का इस्तेमाल आपका generally किया जाता है for the cyber security and all. ठीक है, so that is also part of this, and this is one of the most emerging technology in like when you study the cyber attacks and all, right? Integration of artificial intelligence, machine learning, virtual reality, and data science in banking. So we do use these different tools for the like CRM or आपका MKIS or आपका database management system. They use these particular tools for the customer satisfaction, for cross selling, for upselling and all, right? साइबर सिक्योरिटी टू बिकम अ टॉप प्रायोरिटी. ठीक है, तो जो ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड अदर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं एक वो रह गया है. ठीक है, कंसर्न है. पेमेंट innovations आपका, that is also part of this one. ठीक है, तो again what will be our correct answer? All 1 2 3 4 5. ठीक है, so all 1 2 3 4 5 should be right answer for this one. Yes, हाँ, so option this will be correct answer for this one. ठीक है, हाँ, it is basically driven through that crypto things. ठीक है, बट आज के डेट में जैसे साइबर फ्रॉड्स पे भी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो लाइक अगर हम सोल्यूशन पे जाते हैं तो ब्लॉकचेन इज द ओनली एग्जिस्टिंग सोल्यूशन. ठीक है, तो जहां पे वी हैव मल्टीपल सर्वर्स. सो
आपका अगर मल्टीपल सर्वर्स होंगे सो इट विल डिफिकल्ट टू हैकर्स टू हैक दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो वो चीज उनके लिए हैक करना आपका डिफिकल्ट होगा, तो जिससे कहीं ना कहीं वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्लाइंट डेटा और द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ऑल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, तो इनमें से डिसएडवांटेजेस क्या है? A large clientele required more efforts for monitoring and tracking. The cost of servicing a retail customer is relatively high. Delinquencies tend to be higher in unsecured retail loans such as personal loans and credit cards and others. Okay? So again, what will be a correct answer for this one? So these all are generally related to that particular one. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको आसान लग रहे होंगे ऑल सॉल्व करने में, बट हाँ, डू लाइक यू हैव टू गो थ्रू दैट सोल्यूशन पार्ट एंड ऑल, ठीक है। तो वहीं से कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशंस के अंदर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा सा उन स्टेटमेंट्स को चेंज कर दे अदर्स, बट यू हैव टू प्रिपेयर थ्रू दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। which of the following is disquieting features in the pricing of product and services by bank, ठीक है। So disquieting features in pricing of product and services by bank, so pricing that risk based and competitive, ठीक है। Charges for non maintenance of minimum balance, charges for check return only, ठीक है। Charges for services that have been provided, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसमें से आपका, ठीक है, charges for services that have been provided, no, so these others are basically kind of simpler one, but this is kind of a concerning thing, ठीक है। charges for non maintenance for minimum balance, ठीक है। तो I'll go with option B. What is your answer for this one, guys? Anyone? No? Yes, हाँ, B सबने आपका लिखा, ठीक है। So charges for non maintenance of minimum balance are often considered a disquieting feature. Customer find it frustrating when a bank charge fee for not maintaining a minimum balance in their accounts, especially when these charges can seem seen unreasonable and difficult to avoid, आपका, ठीक है। Next one, which of the following best characterize the strategic business unit, SBUs? Okay, just give me 1 minute, huh? All right, so just go through this one. Okay. So, which of the following best characterize strategic business unit, SBUs? So, centralized decision making process, large scale operation and result structure. SBU are autonomous decision, small enough to be flexible and large enough to exercise control over most of the factors affecting long-term performance, limited control over factors affecting long-term performances. ठीक है? So most of people are saying C. ठीक है? So specific strategic business units आपका basically where we are treating retail banking is a separate branch, ठीक है, kind of a separate branch where we generally dealing with only on these retail customers and all, ठीक है। So SBUR autonomous division, पहला चीज यहाँ से आपका ये हमें मिलता है, small enough to be flexible and large enough to exercise control over most of the factors affecting its long-term business. So where we generally treat those particular areas as a different business unit kind of, ठीक है। अच्छा, okay, just go through this particular one. I have just 1 minute work, ठीक है। So please go through this particular one, हाँ।
Okay, done. Chalo. Now we'll move to the next question. Which of the following best describe the departmental approach within an organization? So, departmental approach within an organization. ठीक है? So, departmental approach, like where we generally treat like retail banking as a department, wholesale banking as a department, or payment and settlement as a department, treasury as a department. ठीक है? So that is the one. So a decentralized approach with the cross-functional teams and an approach that integrate all function into a single department, a specialized functional approach with segregated departments, and approach that eliminate the need for managers and chain of command. So what will be your correct answer for this one? In case of departmental approach, specialized functional approach with segregated departments. So option C will be right answer for this particular one. Okay. So you'll definitely get question based on these आपका departmentalized SBUs and integrated approach. Okay. So please do take care about these things. Okay. So departmental approach, rather than dividing on a strategic or business line, an organization also can be divided into basis of functions and various team performance. The departmental approach is a specialized functions approach within an organization. This approach segregates the functions of an organization into departments such as accounting, marketing, finance, and others. In case of business wise, it is like retail banking, wholesale banking, and others. These are the one, right? Smaller business within a flat organizations about okay, this is the another one, I guess. Yeah, chalo, next one. Which approach do bank in India use for their retail banking models? तो जो retail banking model है आपका, उसके लिए banks के द्वारा कौन सा approach आपका use किया जा सकता है, ठीक है? So they can use or they can have any of these three, right? वो आपका strategic भी हो सकता है SBU, it can be departmental or it can be integrated, ठीक है? So usually in case of private bank and large bank and foreign banks, they go with strategic business unit. And even top five public sector banks, they also use strategic. Like that day, somebody gave an example of SBI. ठीक है? Departmental is generally used by other private sector, public sector banks, ठीक है? And RRBs, cooperative banks, and all. Integrated is generally useful for the smaller banks, ठीक है? Smaller organization like payment bank, small finance bank, and all, right? So please, their uses in others, their applicability also matter, ठीक है? तो please ध्यान रखिएगा, ठीक है? So many Indian banks adopt the SBO model where they organize their operation into distinct units, each responsible for specific customer segment or product to improve focus on control. Departmental approach, functional departmental approach where an organization is divided into departments. Integrated आपका basically it is a combined element of both SBU and departmental approach, aiming for more holistic and coordinated service offering that align with overall strategic objective of the bank, and it is cost effective also, right? Next one. Which of the following statement is correct regarding the retail banking model used by different type of banks? ठीक है? So पहला आपका strategic business unit, new generation private sector bank, foreign bank और आपका public sector banks. Departmental approach, public sector bank mostly. Integrated आपका small finance bank. So what will be your correct answer for this one, guys? क्या होने वाला आपका सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? What will be your correct answer? All will be right answer, right? So 1, 2, 3, okay? So please do remember this one, okay? This will give you a fair idea, okay? Next one. So the even with the examples also, okay? कौन कहाँ पे use होता है not, according to integrated approach, why is having a unified business beneficial, okay? According to the integrated approach, team, why having a unified business beneficial, team? So to establish a competitive advantage, to reduce the need for technology, to minimize risk and increase profitability through scale, and to
revenue stream. So what will be our correct answer for this one? To minimize risk and increase profitability through scale is the primary objective of integrated structure, right? So it helps to minimize risk by reducing the number of moving part and dependencies. It can help to increase profitability by allowing the business to achieve economies of scale. It make it easier to make decision and implement charges across the organization. It can improve communication and collaboration between different departments and teams also, and it is very cost effective as well, right? Next one. Which of the following correct regarding implementation of model used by bank? Okay, this we done. No. Okay, थोड़ा सा अलग तरीके से आपका. Public sector bank rely on in-house resources with some outsourcing due to regulatory limitations. Private banks, okay, just a minute. Musk, what happened? So private banks, older banks tend to use mostly in-house resources, while newer banks adopt a balanced approach with outsourcing. Foreign banks primarily use outsourcing for efficiencies and client interaction management. So what will you suggest for this particular one? क्या कहोगे आप लोग? All बोलोगे, ठीक है? या only one and two या others guys, ठीक है? So public rely mainly on in-house resources. This is true, ठीक है? Within some outsourcing due to regulatory, कुछ एरियाज पे आपका रहेंगे, ठीक है? और दूसरा आपका प्राइवेट बैंक्स, दे जनरली मेक अ कॉम्बिनेशन, एंड फॉरेन बैंक्स, आई विल गो विद आपका ऑप्शन ए. व्हाट यू सजेस्ट गाइस? यस, ऑप्शन ए इज द ट्रू अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, not the exact similar, but the say with the reference of same one, we generally discuss few other questions also in our previous classes, okay? So please do take care about these things. Next one, chalo, we'll go through the explanation part of this important one, because public sector bank traditionally rely on in-house resources of their operation. However, due to regulatory constraint and need to improve the efficiencies, some public sector bank also use outsourcing for specific tasks. But private sector bank exhibit different approach based on their age. Older private banks tend to use mostly in-house resources, and while the balance approach, the newer one is balance approach. Foreign, they are generally use outsourcing for specific functions, particularly those related to operational efficiencies and client interaction management, right? So that is the one. Next one. Which of the following business approach domain specific in retail banking is correct? Okay. So business approach in retail banking, segmented approach, first one. In this approach, strategies are formulated based on the type of branch, such as rural, semi-urban or metro. Geographical based approach, geography based approach, some bank develop their retail banking model based on different geographic region. Classification based approach, this approach involve classifying branches according to their retail business potentials. So branches may be classified as resource center for this one. So what you will recommend on this particular one? Again, all of the above, right? So all are correct in this particular situation. So a bank can classify their branches or their retail banking on the basis of segment approach. Rural, semi-urban, urban. Mostly you will see this one. Geography based can be region wise and all. And classification based approach, where we generally divide the branches based on a business class and all. And we can have a mix also. ठीक है? तो इन सब का mix भी आपको देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है? Which technological model of which technical model do public sector bank typically rely upon? ठीक है? So public sector banks के अंदर अगर हम लोग देखें overall technological models के लिए, तो कौन सा structure they generally use in their bank? So complete on in-house model, on in-house model with partial outsourcing, on outsourcing model with slight insourcing, ठीक है? Completely on outsourcing model, ठीक है? तो कौन सा आप इसमें से select करेंगे?
ऑप्शन हितेश सर आपका सेइंग ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है सर आपका आंसर, ठीक है। सो ऑन इन हाउस मॉडल विद पार्शियल आउटसोर्सिंग, ठीक है। सो ऑप्शन बी will be right answer for this particular one. Very good, guys. Next one. So public sector bank tend to use a combination of in-house model of core operation and technology functions with partial outsourcing for non-core or specialized tasks. Okay? This help to maintain a control while benefiting from the external expertise. Next one. Which of the following statement are correct regarding the हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल सिस्टम भी हमने पढ़े थे हॉरिजेंटली और वर्टिकली, आई होप यू गाइस रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो द हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल इज अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर दैट यूज डिफरेंट प्रोसेस मॉडल for different product. Horizontally organized model is a modular structure using different process model for different product, or the model offer end-to-end solution product wise. What you will suggest, team? What you will suggest for this one, guys? Quickly, team. So horizontal and vertical, team. So vertical में क्या था आपका, like we for similar kind of services we are having a similar kind of process, ठीक है। So like जैसे हम क्या करें, कंबाइन करें, उन कंबाइन को एक साथ आपका चला रहे, बट इन केस ऑफ हॉरिजेंटल इट शुड बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, ठीक है। क्यों, देखो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सिमिलर, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, दे जस्ट हैव एडेड वन डिफरेंट लाइन फॉर प्लस दिस, ये आपका इसी का पार्ट है, ठीक है। एंड दे जनरली हैव एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोडक्ट वाइज आपका, ठीक है। जैसे for product A we have a different process, product B we have different, but in case of vertical we have for like let's say there are 4 similar type of product, so for all these 4 product we have a different one, okay? Or the other one we have different one. Please do remember this, you can expect one question based on this also, okay? So horizontally organized model in modular structure using different process model for different product offering end-to-end solution product wise, right? Horizontally organized model in a modular structure use this offering end-to-end solution, and in most public sector banks horizontally organized model is the standard norms, okay? So I hope this is clear to all of you. Next one. What best describe the digital revolution in banking? Okay, so digital revolution in banking. So out of the 4 given options, you have to find out the most appropriate one, right? तो क्या होगा आंसर? Offering cross-channel marketing campaign during special events, using deep customer insight to determine the next best action, enhance customer relation, reducing operational cost and improving efficiency through self-service output, a combination of self-service output, big data analytics, and cross-channel marketing campaigns that leverage deep customer insight to offer targeted personalized offers in all, ठीक है। So कौन से ऑप्शन में जाएंगे आप लोग? Quickly. देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। We know the importance of this digitalization banking, or the impact of digitalization on our banking system or on retail banking and others, ठीक है। देखो अब why I'll not say this option C, because C is kind of sub part of this D, ठीक है। So देखो क्या है ना, आपका सी में आपका आधी चीज है, ठीक है, बट इफ यू स्टडी डी सो इट इज लाइक यहां तक तो आपका सी की चीजें हैं, ठीक है। कैंपेन दिस, इवन वी यूज दिस cross selling, app selling and all, and for that one we use big data, artificial intelligence and all. I'll go with option D, ठीक है। So what should be your correct answer for this one, ठीक है। Why not C? C is also correct, but अगर हमें 2 करेक्ट में से भी एक आपका सेलेक्ट करना होगा 10, because this is the complete statement about that particular one. Understood? Those who mark C for this particular one, right? So a digital revolution in banking is characterized by the integration of self-service option, big data analytics, cross-channel marketing strategies. By leveraging deep customer insight, bank can offer targeted and personalized offers. Okay, so this is the one. Next one, guys. How does retail banking differ from corporate and wholesale banking in terms of basic approach? This is very simple one, ठीक है। So very basic one, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। रिटेल बैंकिंग फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर, while corporate banking primarily serve corporate clients.
Retail banking is a mass market banking model where wholesale banking is smaller segments. Second, corporate banking follow the B2C, ठीक है, and retail banking follow B2B, ठीक है. तो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में से, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस वन गाइस? वेरी सिंपल वन, ठीक है. आई होप एवरीबॉडी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको सही तरीके से आना पड़ेगा, ठीक है. मतलब लाइक इट इज वेरी डूएबल, ठीक है. सो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है. द अप्रोच इज रॉन्ग, ठीक है. सो हियर वी हैव B2B एंड हियर वी हैव B2C आपका, ठीक है. हम लोग यहाँ पे रिटेल में क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन होता है. होलसेल में आपका वी आर इंटरेक्टिंग लाइक बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर फर्म दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है. So we have to find out the correct one, right? Yes. So only आपका 1 and 2 will be correct answer for this particular one, right? Next one, guys. Which of the following best define profitability? Yeah, so profitability is a measure of an organization's profit relative to its expenses. Profitability compare how much profit a company make compared to its overall revenue and cost. Profitability is a measure of efficiency and ultimately reflect the organization's success or failure. Or the fourth one is all of the above. So which option you will opt out of these four options, ठीक है. तो ये सारे ही आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो डेफिनेशंस आपके दिए गए ना, all these three definitions are correct and these definition are part of your book itself, ठीक है. तो ये सारे ही definition and you can expect one question based on profitability and profit आपका, ठीक है. So ये इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन हमारे पास है भी आएगा सी, which of the following statement is incorrect? So profit is an absolute figure while profitability is a relative measure. Profitability is an absolute figure where profit is relative. तो इन दोनों में से हमारा आंसर होने वाला है. Profitability measure a company's efficiency relative to its size. Profit is absolute value calculated by the subtracting expenses. Company may generate a profit, but this does not necessarily indicate that company is profitable in long term, ठीक है. So which statement you opt out about the profit versus profitability? देखो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने बोला इन दोनों में से एक होगा पहली चीज, और उन दोनों को भी अगर जस्टिफाई करना है, सो यू कैन स्टडी दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो दिस इज इनकरेक्ट. Profitability is a relative measure, profit is a absolute measure, ठीक है. तो प्रॉफिट में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर्स वी गॉट, कि जैसे 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक. प्रॉफिटेबिलिटी लाइक based on this business transfer आपका revenues, expenses and all, this can be that kind of a futuristic approach or numbers we can get, right. Increase staff productivity is a crucial factor in improving branch profitability. Which of the following statement is inaccurate or incorrect? Increase staff productivity is a crucial factor in improving branch profitability. Which of the following statement is incorrect? Reducing a process cost, clearing a defined expectations in scorecard, improve motivation and rewards, technology alone is sufficient to increase this. चलो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, अगेन ठीक है, डुएबल है, ठीक है. आई होप एवरीबॉडी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है. और थोड़ा सा अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनको उनके साथ भी सेशन को शेयर कर दीजिए. सो दिस इज द काइंड ऑफ रिविजन व्हाट एवर वी हैव डन इन पास्ट 6 to 7 क्लासेस, ठीक है. तो यहाँ से आपको एक फेयर रिविजन मिल जाएगा सारे मॉड्यूल का, ठीक है. देन आफ्टर दैट वील हैव अ फाइनल मैराथन टुमारो, ठीक है. कल हम लोग एक फाइनल मैराथन आपका करेंगे और उस फाइनल मैराथन में आई विल कम अप विद दैट सेट ऑफ सीरीज आपका जैसे एएफएम में किया था. एंड आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फॉर दैट वन कि पहले 2 मार्कर क्वेश्चन को करो. 2 मार्कर अगर आप कर लेते हैं एक बार अच्छे से तो 1 मार्कर और हाफ मार्कर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं. फिर भी चांस नहीं लेना तो 1 मार्कर करो, ठीक है. 2 मार्कर और 1 मार्कर का कॉम्बिनेशन कर लिया तो हाफ मार्कर आपसे आसानी से बन जाएंगे एग्जामिनेशन. तो सेम सीक्वेंस, बिकॉज इट इज आपका वो हमने टेस्ट किया और आपका प्रूव हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे भी आपका अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों. तो कल का टाइमिंग जो होगा ना दैट विल बी अराउंड 9 PM, ठीक है. आज एक्चुअली मेरा एक सेशन है तो इसलिए मैंने जल्दी किया था, बट हाँ टुमारो विल हैव सेशन एट 9 PM इटसेल्फ, ठीक है. और 9 PM पे आपका जो फाइनल रिवीजन हम लोग करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट है, इनमें से आपका कौन सा फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर?
अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इनकरेक्ट, ठीक है, मुझे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन का आंसर बताना है अब आपको, ठीक है। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। इन्हीं का आपको मार्जिन भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी इज अ यूनिट ना आपका मॉड्यूल ए के अंदर, उसी से, और इनके ऊपर हर बार वो आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला सारे आपके एक सीट पे हैं, इनमें से एक फॉर्मूला गलत लिखा है जो दिख रहा है साफ साफ, और बाकी के तीन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। सो विघ्नेश्वरी मैम इज सेइंग ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। ये मैंने आपको एएफएम में पढ़ाया था, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट दीस पर्टिकुलर थिंग्स इन एएफएम, सो आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो क्या होगा, पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल या नेट सेल्स या टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे वो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट आपका लिख दे, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, पहला आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जस्ट आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको यहां से मिला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। Just after operating profit, we calculate net profit. So net profit is equal to operating profit minus taxes and interest. और ये ऐसा भी हो सकता है कई बार, अगर ग्रॉस प्रॉफिट लाइन में नहीं है, सो इट कैन बी लाइक आपका आपका नेट प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए, ठीक है। दैट इज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आल्सो इंक्लूड योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी, ठीक है, और ये भी आपका सही है। अब जो हमारा राइट आंसर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase minus आपका क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर कोई उसने अलग से दे दिया आपको तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अगर वो आपको न्यूमेरिकल भी देना तो थोड़ा सा इस तरीके से इनको आपका याद रखिएगा। अंडरस्टूड गाइस, नाउ इट इज क्लियर एवरीवन, नाउ इट इज क्लियर Vigneshwari ma'am, now this is clear. Please do take care about this. And it is very important topic for your RBWM examination at least. So here you can expect one or two questions based on this. ठीक है. Similarly, they can also ask you calculate margin. ठीक है, gross profit margin, आपका operating profit margin और net profit margin. ठीक है. So how you will calculate margin? You just have to do one thing, margin और ratio आपका, ठीक है. So gross why my marker is not working, ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा, सो ओके, सो मेरा बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इट विल टेक 2 मिनट टू रिजॉल्व दिस, ठीक है। टिल टाइम यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है, इफ यू हैव सम क्वेरीज सो यू कैन ऑल्सो आस्क। सब लोग घर पहुंच गए ना? So in this one session, we will revise all the five modules included. Five means that additional study material. Then I hope आप लोगों ने पिछले सेशन आपका देख लिया होंगे, ठीक है। Previous sessions are very very important one, ठीक है। So now then tomorrow we'll have a final kind of, I'll come with a set of 100 question downside, ठीक है, and the sequence will be two marks, 2 marker, 1 marker and आपका half marker, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आपका लेके चलेंगे, सो विल बी रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड जैसे आई हैव ऑलरेडी शेयर दोस पीडीएफ इन ऑल इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सो प्लीज गो थ्रू दोस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, एक बार उनको अच्छे से आपका पढ़िएगा और अच्छे से उनको आपका देखिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा लाइक दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, सो डू नॉट स्किप दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन पार्ट पे अच्छे से काम करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब ये जो लिखा हुआ था हमारा वो सब चला गया है अभी तक का, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट पे।
हाँ ओके हियर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो चीजें जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो हाँ अर्चना, अर्चना हैव यू सीन द प्रीवियस सेशंस और नॉट, ठीक है। जो पिछले जो सेशन हमारे हुए हैं वो आपने देख लिए हैं मॉड्यूल वाइज आपका, ठीक है। सो दिशा मैम ने आपका जो मॉड्यूल वाइज समरी आपका है वो किया है, ठीक है, हर एक मॉड्यूल के लिए, ठीक है। ऑल द 5 मॉड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन समरी ऑल्सो, पीडीएफ्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा उतना टाइम तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ्स के थ्रू आपका गो थ्रू कर सकते हैं, जहां पे आपको जिस मॉड्यूल में चैलेंज आना है, जैसे आपको चैलेंज आएगा मॉड्यूल ई के अंदर एडिशनल रीडिंग मॉड्यूल वाला जो है, उसको आप उस सेशन का वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छे ढंग से मैम ने किया है, ठीक है। दूसरा देन वी हैव यूनिट वाइज सेशन, आपका यूनिट वाइज आपका मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज, ठीक है। हर एक मॉड्यूल में एक सेशन में हमने मॉड्यूल ए एक सेशन में, मॉड्यूल बी के लिए 3 सेशन, सी एंड डी, सी के लिए एक आपका, डी के लिए, डी और ई के लिए एक सेशन आपका। तो ये अगर आपने देख लिया है देन यहाँ से रिवाइज करेंगे, कल एक सेशन करेंगे, सो यू विल बी एबल टू इजीली एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ बैंक प्रॉफिट, ठीक है, नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ बैंक प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, आपका अर्निंग फ्रॉम आर्बिट्राज, इंटरेस्ट अर्न ऑन इट्स एसेट्स, ठीक है, फी चार्जेस ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर आपका अर्निंग ऑन आर्बिट्राज, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो अर्निंग फ्रॉम आर्बिट्राज, आर्बिट्राज इज बेसिकली बाइंग इन वन मार्केट सेलिंग इन अनदर मार्केट, ठीक है। सो जैसे लाइक लेट्स से देयर इज अ सिक्योरिटी जिसका शेयर प्राइस आपका बीएससी में समथिंग एल्स एंड एनएससी में समथिंग एल्स, इट इज इलीगल नाउ डेज, ठीक है, इंट्राडे में बेसिकली ये नहीं होता है एंड इट इज नॉट अ बिग सोर्स, ठीक है। तो हमारे जो कोर सोर्सेज हैं वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड, आपका फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड सर्विसेज, दे आर जनरली मेजर सोर्स फॉर द अर्निंग्स आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, 8 देयर सेल्स इज 8 लाख, cost of goods sold is 4 lakh this, operating expense is this, and taxes and interest is this, ठीक है। So what you have to calculate, you have to calculate gross profit, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, देन उसके बाद आप मुझे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बता दो, ठीक है, ऑपरेटिंग व्हाट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड व्हाट विल बी नेट प्रॉफिट, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन आल्सो, ठीक है। और इनके ऊपर आपका मार्जिन या रेशियोज भी आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what will be your answer for this question guys, what will be gross profit of this company? So देखो क्या एबीसी कंपनी आपका जिसका डेटा है, ठीक है, सेल्स मींस अगर यहाँ पे उसने सेल्स रिटर्न भी दिया होता तो वो आपको माइनस करना पड़ता टू कैलकुलेट द नेट सेल्स, बट सेल्स रिटर्न नहीं है, सो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्लस माइनस करने हैं सर। सो हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका नेट सेल्स, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 लाख 4 लाख, तो 3,50,000, ठीक है, 3.50 लाख, तो दिस विल बी योर आपका ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट विल बी, अच्छा डी क्यों लिखा है, अच्छा रामकृष्णा सर योर आंसर्स, वी जनरली गॉट योर आंसर्स बट बिट लेट, हाँ, सो यू कैन click on that live streaming so you will be live with us, okay। तो पहला तो सी होगा। अब now tell me what will be the operating profit of this particular company, what will be operating profit of this particular company, who will tell first, ठीक है, बताओ। आप लोगों का कैलकुलेशन दिन भर पैसा गिनते रहते हो तो आसानी से निकल जाएगा ना, ठीक है, मतलब नॉट ओनली पैसा गिनना बट और भी चीजें, बट हाँ पैसे के आसपास रहते हो आप लोग तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज हाउ मच, आपका किसी ने नहीं बताया, इतना तो आसानी से यार ऐसे ही पता चल रहा है, यहाँ देख के पता चल रहा है फिगर को, ठीक है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी हाउ मच आपका 1.50 लाख, ठीक है, सो 1.50 लाख एंड नेट प्रॉफिट विल बी 50,000, ठीक है, 50,000। ये सबको समझ में आया कैसे मैंने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। हाँ बिल्कुल कमल सर, आपका 1.50 लाख, दिस इज योर 1.50 लाख एंड दिस इज योर 50,000, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्सेस इन आपका जो भी इंटरेस्ट दिया है या जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो सब, ठीक है। इसके बाद
अगर वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए देता, सेम क्वेश्चन में कॉमा करके लिख देता व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या रेशियो, तो हाउ यू विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3.50 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है इसका? 8 lakhs, ठीक है। सो दिस द आउटकम विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता तो 1.50 लाख डिवाइड बाय 8 lakhs आपका इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, सो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका सेल्स इंटू 100, सो दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? Because you definitely going to face one question either on based on this gross profit, net profit, operating profit, or based on that margin और ratio आपका, ठीक है। So I want कि like कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो आप अपने डाउट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। सो रिटर्न ऑन एसेट्स अगेन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। सो हाउ वी कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट? सो ROA द ओल्डर मेथड, ठीक है। सो इट इज आपका नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है, इनटू 100, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है। सो ये आपका, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? क्या होगा आंसर? साफ साफ दिख रहा है ना आपका 10 लाख आपका 2 करोड़, ठीक है। सो 10 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ 0.05, सो इनटू 100 इज 5%, ठीक है। सो क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर? इसके लिए आपका 5% विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स वीक है या क्या है, क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इतना इतना आसान है कि आपको फॉर्मूलाज याद रखने और बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो थोड़ी फिर भी दिक्कत है तो कैलकुलेटर, वैसे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी RBWM के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। In the case of retail banking, the ticker size of the loan will be dash and the customer base will be dash and the interest spread will be dash, ठीक है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका आपका, ठीक है। So fill in the blanks. So you have to fill the blanks. There are 3 blanks, ठीक है। तो पहला आपका ticket size of loan in case of retail banking is small, ठीक है। स्मॉल आपका हमने नंबर देख लिए, लो, स्मॉल, लेस, हाई और ये आपका, ठीक है। while the कस्टमर बेस विल बी आपका क्या होगा? ह्यूज होगा या लार्ज होगा, ठीक है। जो भी है, ह्यूज है, लार्ज है, नहीं ह्यूज है, ठीक है। तो एच कर लेते हैं इसको, ठीक है, एच आपका, ठीक है। एंड इंटरेस्ट स्प्रेड हियर विल बी, तो इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होगा आपका? इट विल बी हाई, ठीक है। सो इट विल बी हाई, सो आपका आंसर स्मॉल, हाँ, तो पहला ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो अगेन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। So retail banking typically involve providing financial services to masses. Um, ticket size is low, and if we talk about the customer base in retail banking is usually large as cater to individuals and all. ठीक है, next one. Which of the following best describe the departmental approach within an organization? So departmental approach within an organization. So what will be your correct answer? An approach integrate all functions. Okay, this question we solved, huh? We'll quickly go through this. Specialized function approach which segregate departments, so C will be correct answer, and we have already practiced this particular question, right? Next one, which approach is commonly adopted by smaller business and combine socio-economic aspect to tackle business problems? Socio-economic aspect means the interaction among the different stakeholders or the employees or the departments and all, ठीक है। so that is with reference to this banking system, ठीक है। तो कौन सा अप्रोच इनके लिए सुटेबल होगा आपका इन दिस पर्टिकुलर केस? so what will be your correct answer? integrated approach, ठीक है। so integrated approach will be suitable. In case of SBU we have a different, like for retail banking we have a different part, a different segment, ठीक है, different branch kind of. Departments we have a branch but we have different departments, but in case of small businesses and all, like small banks and all, ठीक है। so जहाँ पे आपका like they are generally work on the cost things and all, तो ये सारे benefits जो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
So next one, which approach is commonly adopted by smaller business and acha, okay, this is a repeat question, sorry guys. Next one, which of the following is correct formula to calculate gross profit margin? बताओ क्या होगा आंसर? अभी हमने इस पर डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, तो अब तो ये बहुत आसान हो गया सबके लिए. So gross profit margin. So gross profit margin is sales operating a profit. Sorry, not this. आपका gross profit margin है ना, ठीक है. So gross profit divided by sales. A only will be right answer for this particular one. बिल्कुल सही. ठीक है, A only will be right answer. Which of the following statement accurately represent the impact of non-interest income component on bank profitability? ठीक है. नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट्स ऑन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, तो अगर हमारा बैंक या हमारा ब्रांच ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होगा जहां से इंटरेस्ट अर्निंग आपका नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट को बढ़ा रहा है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. ठीक है, सो इट विल रिड्यूस आवर प्रॉफिटेबिलिटी. तो क्या होगा आंसर? नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट सच एज कमीशन इनकम, सर्विस चार्जेस, this influence, no. Non-interest income components can positively impact profitability, increase interest margin. Non-interest income component is, if high, can lead decrease the profitability due to increase the operating cost. ठीक है, so option C only will be right answer for this particular question. Understood ना? ये समझ में आया ना सबको आपका? ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट एंड नॉन इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको. नेक्स्ट वन, what is the purpose of calculating fixed obligation to income ratio? ठीक है, so आपका टोटल ऑब्लिगेशन डिवाइड बाय मंथली इनकम. ठीक है, फॉर आपका जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो बिफोर वी सैंक्शन एनी लोन एप्लीकेशन. ठीक है, तो जब कोई कस्टमर का लोन एप्लीकेशन आता है तो उसकी सैंक्शनिंग प्रोसेस में हम वी यूज फॉर. ठीक है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो आपका. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, अगर उस कस्टमर के ऊपर टोटल डेट कितना है उसके ऊपर ऑलरेडी आपका जो उसने लिया है, और उसकी इनकम कितनी है, और उसके बेसिस पे मैक्सिमम लोन उसको कितना दे सकते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई कस्टमर की एप्लीकेशन आती है तो उसका एनालिसिस अप्रेजल प्रोसेस के अंदर उसके ऊपर टोटल डेट कितना है और आपका उसकी इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेंक्शनिंग. ठीक है, कितना अमाउंट हम उसको मैक्सिमम सेंक्शन कर सकते हैं, दैट इज द वन. ठीक है, to determine the maximum loan amounts a borrower is eligible based on their income, to establish the interest rate, to ensure the borrower do not take excessive, to assess penalty. No, so I'll go with option A only. ठीक है, so option A only will be right answer. ठीक है, so FOIR, प्लीज इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा. ये FOIR का फुल फॉर्म भी कई बार वो पूछ लेते हैं. इज कैलकुलेटेड बाय बैंक टू इंश्योर बोरोवर्स from the salaried class do not take excessive borrowings. FOIR is used to determine the portion of borrower's income that goes toward fixed obligations, including loan repayments. So FOIR, total fixed obligation divided by net monthly income into 100. So जिससे हम लोग इसको आपका कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. How can bank utilize Maslow's hierarchy of need to effectively structure their product and services? ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मतलब एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, कम्स डाउन साइड में आपको बोल रहा हूं, और 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा. ठीक है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. सो अब्राहम मैस्लो वाज द थ्योरिस्ट. उन्होंने एक आपका मोटिवेशन थ्योरी दिया जिसको हम लोग दिस थ्योरी इज जनरली बेस्ड ऑन पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. देयर आर 5 स्टेजेस इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी. ठीक है, आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन वी हैव आपका safety needs, then we have love and belongings, also known as social need. ठीक है, fourth one is esteem and fifth one is self actualization. अब after understanding that theory, and that theory can be applied on our customers, जो हमारे customers उन पे apply कर सकते हैं, accordingly we can pitch product to them. ठीक है, तो उसी के हिसाब से we can do the cross selling upselling things. ठीक है, तो that is the one. तो कौन सा statement आप लोग सी बोल रहे हो? by creating product that address customers need at various stages of life. बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 100% राइट फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो आपका अब यहां से ना दिस पहले तो आप इस थोड़ा इसको याद रखिएगा. कई बार अगर उसको लगा कि वो आपको इस पिरामिड के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, सो ये अप्रोच कैसे चलता है? फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, देन आपका सेफ्टी, ठीक है, देन वी हैव सोशल, और आपका विच इज ऑल्सो नोन एज लव एंड बिलोंगिंग्स. ठीक है, देन वी हैव एस्टीम एंड देन वी हैव
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका जो बाइफर्केशन है, दिस चार्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। तो जिसमें आपका जैसे फिजियोलॉजिकल में आपका कोर बैंकिंग, सेविंग, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन, ये तक। सिक्योरिटी नीड्स आपका, ठीक है, रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टैक्स प्लानिंग। सोशल नीड आपका कस्टमर लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन एंड कार लोन्स। इसके अलावा आपका लोन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, इंश्योरेंस कवरेज, कवर टैग टू अबव लोन्स, रिटेल गोल्ड कॉइन्स, हेल्थ इन पॉलिसीज, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड एंड अदर्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यूलिप्स, ठीक है। एस्टीम आपका स्पेशल टर्म डिपॉजिट, आपका टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, आपका सेकंड हाउसिंग लोन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पेंशन, रिटायरमेंट्स एंड सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट, ठीक है। So you can expect at least one question based on this. Please do take care about this very important one for your upcoming examination, ठीक है। तो इसको तो मैं आपको अगेन बोलूंगा, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन एक बार इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलो, in which stage of product's life cycle might a retail bank focus on maximizing profit while competition increases, ठीक है। So in which stage of product life cycle might a retail bank focus on maximizing profit while competition is getting increased, ठीक है। तो कौन सा स्टेज होगा आपका ये? सो दिस इज आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। सो प्रोडक्ट एट मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो आपका अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज सेल्स विल बी लेस, आपका अनदर वन इज ग्रोथ, जहां पे आपका सेल्स नंबर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। मैच्योरिटी आपका जहां पे वो एपेक्स में पहुंच जाएगा, एंड डिक्लाइन इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन ऑल, ठीक है। सो हमें इनोवेशन या अदर्स इनकी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। नेक्स्ट वन, which of the following best describe the characteristics of a product in decline phase, ठीक है। डिक्लाइन फेज में क्या होगा? रैपिड मार्केट एक्सपेंशन, ये आपका ग्रोथ फेज है, ठीक है। डिक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट एंड सेल, ठीक है, दिस इज आपका ट्रू अबाउट द डिक्लाइन फेज। इंक्रीज एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स, ये आपका इंट्रोडक्शन फेज है, ये आपका ग्रोथ फेज है, ठीक है। हाई कस्टमर लॉयल्टी आपका, ये दिस विल बी पार्ट ऑफ ग्रोथ इटसेल्फ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए? बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस? सो जब भी हम लोग कोई नया प्रोडक्ट आपका इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस आपका होता है या प्लान करते हैं लाने का मार्केट में, तो उसका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है उसमें पहला स्टेज कौन सा होगा? दैट इज योर आइडिया जनरेशन, ठीक है, कि हम क्या लाने वाले हैं, आइडिया जनरेशन, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। आइडिया जनरेशन विल बी द वेरी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सो दीज आर द स्टेजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, मल्टीपल आइडियाज है, ठीक है। तो जैसे आइडिया जनरेशन में विल आस्क मेंबर्स, आप बताओ क्या नया कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, हमारे एग्जिस्टिंग के हिसाब से कौन सा मैच करता है, कोई ऐसा तो नहीं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एड ऑन के साथ हो सकता है, या कोई नया है जो मार्केट में किसी ने नहीं किया और डिमांड काफी ज्यादा इन ऑल, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या होता है? मतलब आपका एक छोटे से कस्टमर बेस के साथ हम उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं, फीडबैक ले रहे होते हैं, इंप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। देन आपका बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, बेसिकली ये कमर्शियलाइजेशन फेज हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड आप, अच्छा ओके, कमर्शियलाइजेशन इज दिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आपका कैसे एग्जीक्यूट होगा, एंड आपका बिजनेस एंड एनालिसिस, मार्केट पूरा, एंड दिस इज द कमर्शियलाइजेशन स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, what happened during the market testing, ठीक है। सो मार्केट टेस्टिंग में क्या होता है आपका? जनरली जब हमारा जो नया प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, एंड उनसे फीडबैक आपका ले रहे होते हैं, और अगर सब कुछ सही है देन विल सेंड इट फॉर कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। सो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टू द प्रोडक्ट आर मेड नो, आपका द प्रोडक्ट इज मार्केटेड टू अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है। सो बी ओनली विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। Which of the following factor typically has the most significant impact on a credit score, ठीक है। क्रेडिट स्कोर के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका होता है, बताओ जरा। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? आपका पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है। तो उस कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आपका डालने वाला है, ठीक है।
how can an individual access their credit report from a credit information company CIC in India? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? We can access through the email or by visiting their website by providing our PAN numbers. ठीक है, तो क्या होगा आपका? By submitting a request online or through mail. ठीक है, so option B will be right answer for this particular. ठीक है, ये easy question है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीडी आपका स्पीड में इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, what happen if borrower default on a loan in term of credit आपका credit information जो एजेंसीज हैं रिपोर्टिंग, so their credit report remain unchanged, the default will be reported and negatively affecting their credit score. B only will be right answer for this particular one. आगे जाने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, how does having a diverse mix of credit types like credit cards, mortgage, auto loan influence credit score? ठीक है, there is a person जिसने आपका, जैसे उसने खाली होम लोन या खाली लोन ही नहीं ले रखे, बल्कि उसने लोन के जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका उसने एक लोन ले रखा है होम लोन, दूसरा उसने पर्सनल लोन नहीं लिया बल्कि क्रेडिट कार्ड ले लिया, उस ऐसे आपका जो अलग अलग है उसके लिए. ठीक है, सो इट हैज नो इफेक्ट, it can positively impact the score, it always lower the score, it complicate the credit score. ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर? यस, वेरी गुड, it can positively impact the score आपका. ठीक है, तो अगर वो सही ढंग से सबको मैनेज करा है तो वो आपका it will have a positive impact on this particular one. ठीक है, so overall आपका factors that leading a favorable credit score: on time payment of EMI, regular payments of credit card bill, by paying credit card bills in full rather than paying minimum due amounts, avoiding over leverage, मतलब ओवर बर्डन्स आपका डेट लेना और उसको यूज करना. ठीक है, maintaining strong financial records, too many form of credit such as unsecured personal loan among family members, proper utilization of approved credit limit, ensuring bank and other financial institution you are dealing with record and submit positive information to CICs, requesting and maintaining a copy personally rather than through the financial institutions. Please do remember this. और ये जो number of CICs and others है जिनको हमने पढ़ा था उनको ध्यान रखिएगा. ठीक है, next question guys, which of the following is true regarding joint saving accounts? ठीक है, joint saving accounts. ठीक है, so joint saving account आपका दो लोगों का. ठीक है, all account holder must sign for withdrawals, नहीं कोई भी एक कर सकता है. ठीक है, so this is not correct I guess. ठीक है, they can be set up with different modes of operation such as either in survivor. ठीक है, ये हो सकता है. they typically offer lower interest, no. they have no restriction on number of withdrawal, नहीं, जैसे आपके उसमें होंगे और में होंगे वैसे ही यहाँ पे भी होंगे. so what will be our correct answer? B will be right answer for this one. In which scenario bank typically offer a higher interest rate on fixed deposit? Higher interest rate on fixed deposit. ठीक है, तो अगर एक कस्टमर ने आपका 10 साल के लिए किया और एक ने आपका 1 साल के लिए किया, सो 10 साल वाले को हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट आपका वो अर्न करेगा. ठीक है, सो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वन बेसिकली व्हेन द अकाउंट होल्डर्स हैज मल्टीपल अकाउंट, नो. For deposit made in foreign currency, when the deposit amount lower than the bank minimum, no. For अच्छा okay, for longer term deposit compared to short term one. So option B will be correct answer for this one. ठीक है, next one. Minor can operate their own saving accounts without any restrictions once they turn 18 years. True. Parents or guardians are required to manage account for minors until they reach to certain age. So both are correct. So both statements are correct about this particular thing, right? Next one. Personal loan are generally unsecured and have higher interest rate compared to secured loan. Personal loan can be used for education expense. ठीक है, तो option 1 is true and B is incorrect. ठीक है, statement 1 is true and this is wrong. ठीक है, so आपका 1 is true, B is 2 is false, तो B will be correct answer for this particular one. Very good. So ये जो आपका areas हैं, ठीक है, ये रिवीजन के लिए मैंने आपको तब भी दिए थे एंड आई स्टिल रिकमेंड दिस पर्टिकुलर वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर overseas education loan that may not apply to a domestic loan? ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी इन इंडिया,
a copy of the course curriculum, a detailed project reports on the educational expense. तो क्या होगा आपका इस करेक्ट आंसर इसके लिए? ठीक है, a letter of acceptance from the educational institution abroad. ठीक है, जो आपका फॉरेन का जो भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वहां से उसके एडमिशन का जो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, दैट विल बी रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज. नेक्स्ट वन, which of the following type of PPI, ठीक है, prepaid payment instrument, you can expect one question based on this. ठीक है, खासकर जो टाइप्स आपका है, ठीक है, आपका क्लोज, सेमी क्लोज और ओपन. ठीक है, तो उसमें और उनका जो यूजेस है आपका, जैसे कैश और नॉन, मतलब ओनली ओपन पीपीआई दे हैव कैश बेनिफिट, कैश विड्रॉल बेनिफिट्स, और दे आर ओनली इशूड बाय द बैंक. ठीक है, अदरवाइज इन केस ऑफ क्लोज आपका क्या होता है, दैट इज लिमिटेड टू अ सिंगल मर्चेंट. ठीक है, आपका जो सेमी क्लोज है उसमें कैश बेनिफिट नहीं होंगे, बट हाँ यू कैन यूज एट मल्टीपल आउटलेट्स. इस तरीके से ओपन आपका कैश की तरह कहीं पे भी. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपीआई कैन ओनली बी यूज एट अ स्पेसिफिक मर्चेंट एंड कैन नॉट बी रिडीम इन कैश? तो क्या होगा हमारा आंसर? क्लोज पीपीआई. इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्लोज पीपीआई. ठीक है, देखो स्पेसिफिक मर्चेंट आपका, सिंगल मर्चेंट आपका जिस पे ये यूज होगा. अगर देखो क्या होगा, जैसे सपोज दैट देयर इज अ एक वाउचर है आपका जो यूज होगा सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड में. ठीक है, उसी ब्रांड की आप शॉपिंग कर सकते हो, दैट इज द वन. ठीक है, सॉरी. नेक्स्ट वन, which of which of the following best describe the ECS क्रेडिट फैसिलिटी? बताओ, ECS क्रेडिट फैसिलिटी कौन से केस में आपका रहेगा? So ECS credit facility, it is used to debit funds from customers account. It facilitate bulk payment transactions such as salaries and dividends. It allow the real time fund transfer. It restrict government payments only. नहीं, ठीक है, देखो क्रेडिट है तो आपका फैसिलिटेट बल्क पेमेंट ट्रांजेक्शन, आपका जैसे सैलरीज क्रेडिट करानी है कस्टमर्स के, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके अकाउंट में, या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आपका डिस्ट्रीब्यूट कराना है इन अदर्स. सो बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो टाइप ऑफ ईसीएस, ठीक है, हमने पढ़े थे ना लोकल, रीजनल एंड नेशनल. ठीक है, नंबर्स, और आपका only in case of local we have bank also, they can be set up by a bank. Otherwise in case of regional and national, these are generally set up by the RBI itself. ठीक है, नेशनल में एक ही है और वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है. ठीक है, सो व्हाट इज और आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल ECS? It process payment and collections within a specific region of a country. It limited to a single bank. It support only a cash transaction and primarily use internet. No. So option A only will be right answer for this particular one. True है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा guys. This is very important one. Again we will revise this. ठीक है. So operating at 81 centers and location across the country. At each of the ECS centers, the branches cover is restricted to the geographical coverage of the clearing houses, generally covering a city or a satellite town or suburbs adjoining the city. These are operated by RBI or designated bank, mostly by RBI, or it can be a bank also. Regional ECS is operating at 9 centers locations at various part of the country. Regional ECS facilitate the coverage all core banking enabled branches in a state or a group of state and operated by RBI. ठीक है, and national ECS is a centralized version of ECS. The scheme is operated at Mumbai. ठीक है, कहाँ से ऑपरेट होती है आपका? ये मुंबई से ECS उसमें काम करेगा, एंड अगेन ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय RBI itself. So this is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखें इनको आपका. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन गाइस. Who coined the term artificial intelligence and was one of the founder of discipline of AI? ठीक है, तो किस, ये लास्ट ईयर का एग्जैक्ट क्वेश्चन था. लास्ट ईयर मतलब ये जो मई जून का पेपर हुआ था उसका. ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो AI was developed by आपका जॉन मैकेथी. ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, सो जॉन मैकेथी कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1955.
at the Dartmouth summer research project on artificial intelligence. He also one of the founder of discipline of AI along with Alan Turing and Marvin Minsky and Herbert Simon. ठीक है, तो इनके नाम भी याद रखिएगा. So they'll also help you out. ठीक है, कौन सा उससे related है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं. ठीक है, why AI in banking industry, or we can say uses of AI in banking industry. So enormous challenges in banking sector. It can be solved through this thrust for process-driven operation. They initiate self-service in branches. Customer desire to deliver different personalized solution. Build functional efficiencies, escalating the productivity of employees. The support focus on productivity and efficiency, visualization to extend human functions with the use of robotic tools to minimize the chances of fraud and scam, manage an immense volume of data at record speed and gain valuable insight to carry out effective decision making. So these are the benefits of AI in retail banking or even in banking system. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन. ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, तो इन दोनों के संबंध में आपका. ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जहां पे बेसिकली हम लोग उसको क्या कर रहे थे, लाइक वो एक ह्यूमन लाइक आपका रिप्रेजेंटेशन रख रहा होता है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस. ऑटोमेशन इज काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जहां पे जो हमारे जो कमांड्स हैं उनके बेसिस पे जो चीज़ों को ऑटो ड्राइव करके चल रहा होता है. जैसे हमने एक एग्जांपल समझा था ना कि आपका जैसे किसी ने अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया, सो वी जस्ट हैव टू मेक अ सिंगल एंट्री, डेबिट एंट्री बाय द अमाउंट, ठीक है, जितने भी से भी हुआ है. रेस्ट थिंग्स आपका जैसे उसके अकाउंट का टोटल बैलेंस या हमारे वहाँ पे कास्ता का टोटल बैलेंस, दैट इज जनरली ड्रिवन थ्रू दी एआई ऑटोमेशन ऑल्सो. ठीक है, जैसे फिनिकल सॉफ्टवेयर है या बैंकर्स है, so they generally work on automation only, right? So AI user use computer control device to take over processes. No, AI and automation are synonyms. AI focus on making machine intelligence and capable of initiating human behaviors, while automation involve enabling software or hardware to perform tasks without human interventions. ठीक है, तो आपने जो 10,000 डेबिट किया था, आपको हर जगह जाके नहीं करना पड़ेगा, आपको एक एंट्री करनी है और रेस्ट विल टेकन केयर बाय द ऑटोमेशन सिस्टम इटसेल्फ, राइट? सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. What are the advantages of implementing artificial intelligence technology in banking and finance? So AI technology decrease the dependencies on AI technology remove the need for customer. AI technology enable customer to access banking services solely. No, AI technology offer personalized financial services, voice assistance and data driven decision making. ठीक है, lending decisions आपका. ठीक है, so D is the most appropriate one, so D will be right answer for this particular one. ठीक है, next one. HR department of an organization need to analyze the employee turnover rate and identify the main reason behind it. Which MIS components would be the most effective for this task? तो बेसिकली उसको क्या करना है, एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करना है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर वन व्हाट दे विल यूज, DSS, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, so they'll use the component called DSS. ठीक है, so DSS will help them out. ठीक है, so DSS component a computer based information system that help managers make decisions. It does this by providing managers with access to data and analytical tools. This allow manager to analyze data and identify pattern that may not be visible to the naked eyes. ठीक है, next one. What are the requirements and provisions related to ratings, valuation and investment in security receipt by ARCs, asset reconstruction companies? So ARCs are required to review the ratings of security receipt twice a year on June 30th and December 31st. Rating agencies must disclose the reasonable for rating a security receipt using recovery rating scales.
Bank are required to keep provisions on stress assets sold through securitization if their investment is such security receipt is over 50%. The threshold for a bank to keep provisions on stress asset sold through securitization will be reduced to 10% as on April 1st 2017. ठीक है, तो क्या है इसका आंसर आपका? आई थिंक एक्चुअली आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट वन. ठीक है सर, इन ट्रेन आई विल वॉच. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ आप कैसे भी देखिए. ठीक है चलो. हाँ सो व्हाट विल गो थ्रू दिस वन. आई गेस ऑल आर द करेक्ट. हाँ सारे ही करेक्ट हैं आपका इस सिचुएशन में अभी. ठीक है सो दिस इज अ काइंड ऑफ जो आपका स्टेटमेंट्स है. प्लीज गो थ्रू दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है एक बार इनको जरूर देखिएगा. सारे स्टेटमेंट सही हैं जो वहाँ पे आपके लिखे हुए थे. ठीक है सो मार्केटिंग का आपका पहला क्वेश्चन. ठीक है इट इज अबाउट द 4 P's, 4 P's and 7 P's. Definitely you'll face one or two questions based on these particular areas, right? So in the context of marketing mix, all elements are interconnected. Which of the following element is not relevant for effectively developing and marketing product or services? So it is priority. So product, price, place, promotion. These are the 4 P's. So product, price, place, promotion. ठीक है तो ये आपका देन पीपल फिजिकल एंड प्रोमो देयर इज वन अनदर. ठीक है विच इज जनरली पार्ट ऑफ दिस वन. ठीक है सो फर्स्ट वी नीड टू डेवलप अ प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन आपका प्लेस एंड देन आपका प्रमोशन. ठीक है सो प्रोडक्ट आपका जो भी हम ऑफर करना चाहते हैं उसका एक सर्टेन प्राइस कितने पे हम उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है प्लेसेस आपका सेगमेंट्स रीजनल नेशनल लेवल या कोई लिमिटेड एरिया मतलब मासेस और क्लासेस डिवीजन एंड आपका प्रमोशन. ठीक है मार्केटिंग आपका दैट इज इन्वॉल्व द प्रमोशन. ठीक है दीज आर द 4 P's प्लस 3 P's आपका और ऐड कर दिए आपका पीपल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस. ठीक है प्रोसेस इज बेसिकली हाउ you are going to like what will be the journey of that particular product. ठीक है that manual with the help of manuals and all we generally define that particular thing that is generally known as process. ठीक है अगर हम जैसे कोई सेविंग अकाउंट आपका किसी को डिलीवर कर रहे हैं. ठीक है सर्विसेज दे रहे हैं आपका तो व्हाट शुड बी आर स्ट्रक्चर. ठीक है उसका आपका जर्नी क्या होगा इन एवरीथिंग. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू डू रिमेंबर ऑल द 7 P's. ठीक है ये सातों P's आपके फिंगर पे होने चाहिए. They'll definitely help you out. Okay, so quickly go through this one here. Okay, just give me one minute. Huh? Somebody is up. Bas?
Hello. Now I'm audible. Sorry. Now I'm audible. I just forgot to switch on that mic. ठीक है. Now it is fine. Okay, thank you. So what will be your correct answer? Within how many days? आपका T plus 5 working days. ठीक है. So T plus 5 working days. ठीक है. So please do remember this one. ठीक है. So T plus 5 working days. ठीक है. ये पूछा जा सकता है आपको. Next one. These are the guidelines. Next one. The integrated ombudsman scheme concept does not include which of the following? Again, you can expect one question based on integrated ombudsman scheme 2021. It is an integration of three schemes. ठीक है. आपका that banking ombudsman 2006 to banking ombudsman 2006, NBFC 2018 and digital payment 2019. ठीक है. So one nation one ombudsman आपका and it does not include these three services. ठीक है. तो जो ombudsman आपका है, जो banking ombudsman है, they do not take cases related to these three areas. ठीक है. A commercial judgment or decision of regulated entities, a dispute between a vendor and regulated entity relating to outsourcing content, a grievance not addressed to ombudsman directly. So these are the three cases which are generally not part of this one. Okay? So I'll highly recommend this particular one, guys. Please go through this. Okay? So earlier we have three scheme. One is banking ombudsman 2006, another one is NBFC 2018, and another one is digital transaction 2019. Okay? So we club these three and we make one nation one ombudsman. ठीक है. आरबीआई के द्वारा आपका डायरेक्टली ये चलता है. ठीक है. So here we have RBI 21, ठीक है, ombudsman scheme 21 seek to resolve customer grievances in relation to services provided by regulated entities. ठीक है. The another important point is some sections आपका section 35A of Banking Regulation Act 1949, 45L of RBI Act and section 18 of Payment and Settlement System Act. ठीक है, जिसके तहत ये काम करता है. ठीक है. And by regulated entities, if not resolved to satisfaction the customers or not replied within a period of 30 days. ठीक है. तो 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन आपका जो यहाँ पे होता है जिनके ऊपर. Now it is audio is fine ना? Now my audio is fine, guys. Yes. Hello. हाँ. So one. Right. So in addition, there is non-scheduled primary cooperative banks with a deposit size of 50 crores. They are also comes under the preview of integrated ombudsman scheme. Okay, so these are the included one. Okay, and these three things are not part of ombudsman scheme. ठीक है, तो जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, and these are generally आपका जो सारे entities यहाँ पे ये काम करते हैं. Why do bank need to implement CRM program to address the following issues? So CRM, customer relationship management, basically it is a software which generally keep data about the customers. ठीक है, जो हमारे existing customers उन सबका सारा डेटा जो यहाँ पे आपका रहता है. ठीक है, we use that data for feedback purpose or for cross selling or for upselling also. ठीक है. So to increase the operational efficiency, to need the drive more value from the customers, increasing competition in retail banking, rising NPAs. So like all type of data are generally available on CRM portal. ठीक है, ये सारे areas से related आपका जो data है that is available on our CRM or bank CRM portal, right? Banking Code and Standard Board of India (BCSBI) has been established to. This is again a very important one. CRM भी आपका, this one is also very important one. ठीक है, तो इन एरियाज को थोड़ा ध्यान रखें. Promote good and fair practices by setting minimum standard for customer interactions. ठीक है, right है. Increase transparency so that customer can better understand what to reasonably expect from the banking services. Encourage market forces through competition to achieve higher operating standards. तीसरा, increase market forces through competition to achieve high operating standards. Okay. Promote fair and cordial relationship between customer and their bank. Foster confidence in बैंकिंग सिस्टम. तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए. ठीक है, हाँ बिल्कुल, ए आपका ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज.
प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, ये आपको हेल्प करेगा आने वाले पेपर में, ठीक है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 21, ठीक है। सो कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। Complaint no longer need to determine which scheme to use. They can file complaint under a single umbrella. तो पहला तो सही है, ठीक है। A centralized receipt and processing center has been established at the RBI in Chandigarh for receiving and identify processing physically and email complaint in any language, ठीक है। This is also true, ठीक है। The RBI the executive director in charge of the consumer education and protection department at RBI will serve as appellate authority. This is also true, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, इसमें हमारे पास all option है, so all are the correct one for this particular one, ठीक है। So please do take care about this, ठीक है। ombudsman scheme के ऊपर डेफिनेट एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रीवियस जो ombudsman स्कीम्स थे वो भी आपका, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देयर वर 3 स्कीम आपका, ठीक है। बैंकिंग ombudsman scheme 6, आपका NBFC 18 एंड ombudsman scheme for digital transaction 19 आपका, ठीक है। तो इनको मर्ज करके हमने आपका एक बनाया, ठीक है। गिवन द स्कोर फॉर ईच पैरामीटर, सो BCSBI से ये कोर्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। BCSBI के जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड बैंकों का जो रेटिंग्स होता है उनके बेसिस पे, ठीक है। सो आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो एवरेज लाइक पहले बिलो एवरेज इज आपका लेस देन 60, ठीक है। सो इफ योर स्कोर इज लेस देन 60, बिलो एवरेज, ठीक है। एवरेज इज 60 to 70, ठीक है। 60 to 70 अब आपका, सॉरी दिस इज बिलो एवरेज, ठीक है, मैंने गलत जगह लिख दिया है, ठीक है। सो आई इरेज दिस। So below average is less than 60, ठीक है। So this above average is 70 to 85, ठीक है। Correct me if I'm wrong, ठीक है। And this 85, ठीक है, greater than 85, ठीक है। तो ये जो numbers हैं आपका, ठीक है, I'll match this particular one first, ठीक है। ये तो आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। So I'll first check these one, ठीक है। आपका 85 60 70 70 to 85 70 to 85, हाँ करेक्ट। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ये तो कोई भी कर लेगा। सो यू जस्ट हैव टू ऐड दीज नंबर्स। तो ये इनका टोटल इज आपका कितना है, 36 आपका 41 51 51 आपका 55 62, सो टोटल इज 62। सो 62 हमारा किस में आ जाएगा, इस वाली रेंज में आ जाएगा, ठीक है। सो सॉरी 62 हमारा आ जाएगा इस वाली रेंज में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, एवरेज। प्लीज डू रिमेंबर दिस चार्ट, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा। हाउ कैन दी टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बी क्लासिफाइड, ठीक है। सो जो टैक्स का डिविजन है आपका, दैट इज इन डिफरेंट पार्ट्स आपका, ठीक है। बेसिकली इन बिटवीन 2 पार्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या होगा आंसर आपका, direct taxes that levied directly on taxpayers and cannot be transferred to others. Indirect taxes पहला सही है, ठीक है। Taxes imposed on goods and services provided by taxpayers that can be passed on others. This is also true. GST is replaced several direct taxes, आपका indirect taxes होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। So indirect taxes, तो आपके ऑप्शन ए मतलब बोथ 1 and 2 will be the right answer for this one. Remaining 2 are wrong. This option 3 is wrong, ठीक है। Why it is wrong? Because GST is all about indirect taxes, ठीक है। It is like there is no relation of GST and direct taxes आपका, ठीक है। For qualifying as a resident of India as per income tax guidelines, the individual has to satisfy. ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार पूछा जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर CIB कोर्स करिकुलम, ठीक है। CIB में भी आपको इस डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ऐसे जो टॉपिक ना जो CIB में होते हैं, दिस इज माय एक्सपीरियंस, थोड़ा एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो वो ना आपको बहुत उनको जरूर टच करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपका जो हर एक अलग अलग सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर 182 डेज और मोर, इंडियंस आपका कहलाएगा रेजिडेंट, ठीक है, टैक्स पर्पज के लिए। स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग years 365 days or more than 60 days or more in relevant financial year,
हैज स्टेड इन इंडिया फॉर, दूसरा भी करेक्ट है आपका, ठीक है, हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन आपका 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। प्रीसीडिंग ईयर्स मींस लाइक जैसे अभी 24 25 है तो 23 24 22 23 दीज आर द 4 ईयर्स, ठीक है। So 1 and 2 will be right answer for this particular one. A will be right answer. Good. ठीक है. So please do remember these particular things. They'll also help you out. ठीक है. ये तो हमने कल ही डिस्कस किए थे आपका, तो ज्यादा चैलेंज नहीं होना चाहिए. According to section 2 subsection 31 of Income Tax Act 1961, who is considered as a person, ठीक है. तो आपका इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स, दे ऑल आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है. तो दीज आर जनरली नोन एज इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है. तो इनको हम लोग पर्सन की तरह आपका कंसीडर करते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम इज करेक्ट, ठीक है. So income from house property, rental income, ठीक है. So rental income from properties other than those occupied by the owners is included. If property is unoccupied, notional income is calculated and included. Section 15 आपका नहीं, Section 18 of the Income Tax Act cover the income from rent आपका, ठीक है. तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. ये तो गाइडलाइंस ना, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको करा रहा हूँ इनको, बट यू हैव टू हैव गो थ्रू दोस पर्टिकुलर थिंग. प्लीज डू रिवाइज एज मच एज यू कैन, ठीक है. स्पेशली दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्वेश्चन वाला तो आपको याद रह जाएगा, आई कैन मतलब वो इतना रह जाता है आपका, मतलब नॉर्मल मेमोरी का गेम होता हो, बट हाँ जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट. Which of the following statement about capital gain is are correct? So capital gain include long term and short term. True. Section 45 of Income Tax Act cover taxation of profit or gain arising from transfer of capital asset. ठीक है, this is also true. ठीक है, so both are correct. ठीक है, तो दोनों ही statements हमारे क्या हैं आपका correct है in this particular situation. ठीक है, next one. Which of the following statement is correct with regard to ELSS, equity linked savings scheme? So ELSS refer to specific equity mutual fund designed to designated for the purpose of tax saving. Investment in ELSS scheme allow a deduction of 1.5 lakh under section 80C. True है. ELSS has a lock-in period of 3 years. This is also true. ठीक है, तो सारे ही statements हमारे क्या हैं आपका correct है about the ELSS scheme. ठीक है. Which of the following statement is correct about long-term capital gain? ठीक है. So short-term capital gain and long-term capital gain. So यहाँ पे 3 areas रहते हैं. पहला आपका 12 months, ठीक है. Then आपका 24 months and आपका 36 month. ठीक है. So 12 months वाला clause is generally for mutual fund shares and all. ठीक है. आपका लेस देन इससे नीचे है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एंड इससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन फॉर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है. इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड ऑल, एंड लेस देन 30, मोर देन 30 आपका मूवेबल एसेट्स आपका उनके केस में, ठीक है. सो क्या है इसमें, कैपिटल एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग and houses property will be considered as long term asset 24 months. True. ये आपका immovable है. Similarly equity preference shares, securities, UTI, this zero coupon bond आपका more than 12 months are considered as long term. ठीक है, तो दोनों ही statements आपके क्या हैं, करेक्ट है. तो आप कोई भी ऑप्शन ले लो इसमें से, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, दोनों ही सही है आपका, ठीक है. सो दैट इज द वन करेक्ट है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस चार्ट. आपका शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल, ठीक है. इमूवेबल लाइक लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपका. मूवेबल अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको 3 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड किया गया, लॉन्ग टर्म. लेस देन दैट आपका शॉर्ट टर्म, ठीक है. अंडर द न्यू टैक्स रेजिम व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल विद एन एनुअल इनकम बिटवीन 10 लाख टू 12 लाख? बताओ. अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा. व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर गाइस? कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था बट उसमें जो स्लैब था वो दूसरा था, ये आपका दूसरा है, ठीक है. सो व्हाट इज आर टैक्स स्लैब? एक बार दोबारा से, 0 to 3 लाख आपका निल, ठीक है.
0 to 3 lakh, देन आपका 3 lakh to 7 lakh आपका एट द रेट ऑफ 5%, देन आपका 7 lakh to 10 lakh आपका एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, देन आपका 10 lakh to 12 lakh एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है, देन आपका 12 to 15 आपका एट द रेट ऑफ 20% एंड मोर देन 15 lakhs आपका एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है. So this is our new tax regime as per Union Budget 2024-25, ठीक है. So as per this our answer will be option C आपका, ठीक है. So option C will be right answer for this one, ठीक है. 10 to 12 lakh है ना, तो 10 to 12 lakh कहाँ पर आता है आपका, इस वाले इसमें, तो 15% आपका जो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होगी, ठीक है दोस्तों. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. नेक्स्ट वन, what is the threshold limit for monetary gifts received by an individual beyond which it charges on taxes. तो कितना होता है, 50,000 आपका, ठीक है. तो अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव कर होता है from the like other than family members and all, so that is also chargeable taxes, that is also subject matter of taxes if the value is 50,000 and above, right? So that is the one. Next one, which of the following is not an example of alternative assets? So alternative asset which include gold, आपका जैसे antiques or commodities or all these kind of thing, ठीक है. Art and antiques, आपका precious metal, fine wine, so these all are alternative asset, ठीक है. Mutual fund is a traditional asset which is majorly part of the wealth management or portfolios management, right? Next one, the main goal of private banking is, so private banking is also known as reserve banking, which is for high net worth individuals, ठीक है. So where we generally provide banking services or customized banking services to our high net worth individuals or the others, ठीक है. So to protect to offer to protect and invest asset for high net worth individuals, B only will be right answer for this one, ठीक है. Next one, what is the role of AMC asset management in mutual fund? So इनका रोल क्या होता है आपका, basically collection or making investment decision and all. What are the requirement for AMC to operate in mutual fund industry? So they have to take registration from SEBI and they have to fulfill the compliances. And which regulatory body is responsible for registering and overseeing asset management companies in India? So it is SEBI itself, ठीक है. तो option B will be right answer for this particular one, ठीक है. तो AMCs और उनके registration और उनके working से related आपका, ठीक है. So that is the one. Next one, in the context of mutual fund, which type of scheme has specified lock-in period and may carry cater to retirement or children? So they are generally known as solution oriented schemes, ठीक है. So solution oriented scheme आपका जैसे आपका रिटायरमेंट प्लान है या फिर आपका चाइल्ड्स मैरिज है, एजुकेशन एंड अदर्स, इनके लिए जो आपका डिजाइन की जाती है. अंडर द न्यू अमेंडमेंट effective from 2021, what is the income threshold for individual to be considered as a resident in India? So it is how much, 15 lakh in normal scenario. In some specific areas it is 10 lakh also, right? Next, dash is the maximum deductions that can be claimed for interest paid on home loans under section 24 of Income Tax Act 1961. So it is how much, 50,000 आपका इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन 24, सो इट इज 2 lakh rupees, ठीक है. सो 24 सेक्शन 24 इट इज 2 lakh rupees, so it is 2 lakh rupees, yes. What is the maximum amount that can be deducted as an interest paid under 80EE for the first time home buyers? So it is how much, 50,000, ठीक है. कितना है आपका, 50,000 for the first time home buyers, ठीक है. So interest paid on home loans deductions available under this particular one, ठीक है. So for the first time home buyers आपका जो इसका condition बनता है, ठीक है. अगला, what role does a depository participants play in depository services? So depository like NSDL and CDSL and we have number of participants, ठीक है. जो कहीं ना कहीं आपका to direct engage with the depository to all related services, to provide depository services investors and manager physically, to assist the transfer of securities bank no, to offer depository services to investors and serve as an intermediary. हाँ, so option D will be right answer for this particular one, ठीक है.
Which of the following statement about the power of attorney are correct? So POA के संबंध में आपका power of attorney is a written authorizations given to another person act on behalf of this. True. Power of attorney create a specific task is known as special power of attorney. Power of attorney can be granted to more than one individual also. ठीक है, तो ये सारे ही statements के यहाँ आपका correct हैं. ठीक है, true है. All the statements are true about that particular one. ठीक है. Which of the following statement are correct regarding appraisal process of home loan? Appraisal process of home loan, application form, proof of identity, salary certification on form 16s. So these all are generally part of this one. So appraisal process में we generally ask these particular documents from the home buyers or from the applicants. What is the essential for a lender to have risk asset acceptance criteria in loan appraisal process to maintain consistency in credit standard and borrower selection? पहला ही सही होना चाहिए. ठीक है, to मतलब this only the correct one. To determine the maximum loan amount, no. To set up this, no. So first one only will be the right answer for this one. Okay? So risk asset acceptance criteria is a set of guidelines that help lender maintain consistency in their loan approval process. By having clear criteria, the lender ensure that all loan applicants are assessed against the same credit standards, reducing the risk of making poor loan decision and all. Right? Next one. ओके दिस इज इट. हाँ दिस इज इट. ठीक है, तो ये आपका जो चारों मॉड्यूल हैं उनका एक काइंड ऑफ समरी रिवीजन आपका. ठीक है, जो आज हमने किया. कल हम लोग आपका बेसिकली इन आवर नेक्स्ट सेशन दैट विल बी अराउंड 9 PM टुमारो. ठीक है, 8:30 और 9 PM आई लेट यू नो. बट हाँ, जो टाइमिंग होगा दैट इज अराउंड 9 PM. ठीक है, सो टुडे एक्चुअली आई हैव अनदर सेशन एट 9 PM. सो इसलिए मुझे ये प्रीपोन करना पड़ा. ठीक है, सो टुमारो विल हैव अ फाइनल रिविजन एंड टुमारो सेशन विल बी बेस्ड ऑन लाइक आई विल कम अप विद कंप्लीट न्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो जैसे आज हमारा था इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन व्हाटएवर वी हैव डन इन द पास्ट फ्यू सेशंस. ठीक है, तो ये आपको एक क्विक चेक दे देगा कि आपको जो पुरानी चीजें हैं वो याद हैं या नहीं है. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन विल हैव अ काइंड ऑफ अ फाइनल मॉक और फाइनल मैराथन वेयर विल अरेंज द थिंग्स लाइक 2 मार्कर 1 मार्कर और हाफ मार्कर. तो इस सीक्वेंस में हम लोग आपका प्रैक्टिस करेंगे. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन योर upcoming examination. One request to all of you guys, please do practice or do revise the PDFs. ठीक है, and whenever you go through the PDFs ना, that explanation part, do not skip that explanation part. ठीक है, questions, if you get the same type of question or same form of question ना, believe me you will be able to answer those particular question. But that explanation related questions ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू दोज पर्टिकुलर वन. ठीक है, एंड लाइक आज मॉर्निंग में ही मैंने सारे PDF दोबारा से सेंड कर दिए हैं आपको, रीसेंड कर दिए हैं आपका ग्रुप्स के अंदर. और यू कैन ऑल्सो एक्सेस थ्रू आवर एप्लीकेशन और आवर वेबसाइट. तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें ले सकते हैं. अगर कोई चैलेंज होता है तो भी आप हमें बता सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू. ठीक है, एंड बट रिविजन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, देखो ये आपका सब्जेक्ट स्टैटिक टाइप का, ये जो आप करते हो वही चीज़ें हैं. कई बार थोड़ा बोरिंग भी लगेगा बट PPB से कहीं कम बोरिंग है. PPB इज लाइक सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है PPB. ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए. और अगर कोई और अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है जस्ट फील फ्री टू रीच अस आउट. ठीक है, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और जहाँ पे PDFs आपका ऑलरेडी अवेलेबल भी है. ठीक है, सो आई विल सी यू टुमारो गाइड. टुमारो विल हैव अ सेशन एट अराउंड 9 PM. ठीक है, 9 to 12 विल हैव वन सेशन एंड दैट विल बी मोर देन इनफ for our final revision and all. ठीक है, so this is it from my side. Thank you for joining this session. Hope you enjoyed this session. Please do give your feedback just in the comment section just after this session. And if you like the session, please do share with your other fellow bankers so they can also take advantages of these particular classes. Okay, so this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye, take care all, and all the very best for your preparation guys. Do revise things. Thank you.